You see it on your screen, drogue deployment. Drogue descent rate nominal. सुनीता विलियम्स के स्पेस में फंसने से लेकर समुद्र में उतरने की पूरी कहानी, जहां डॉल्फिन ने सुनीता विलियम्स का स्वागत किया। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स सिर्फ 8 दिन के लिए स्पेस में गईं और 9 महीने वहीं फंस कर रह गईं, लेकिन अब स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए समुद्र में उतरी हैं। इन 9 महीनों में सुनीता विलियम्स को कई बार स्पेस से वापस लाने का प्लान बना, लेकिन हर बार प्लान फेल हो गया। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव में ये मुद्दा बहुत बड़ी चर्चा का रहा था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो सुनीता विलियम्स को वापस लाएंगे, और वो सबसे पहले सुनीता विलियम्स को वापस लाने के लिए लग गए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही सुनीता विलियम्स को स्पेस से वापस लाने का प्लान बनाया अपने दोस्त और मिलेनियर एलन मस्क के साथ। आखिरकार सुनीता विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट आज धरती पर सुरक्षित उतर आए। तो चलिए देखते हैं सुनीता विलियम्स के स्पेस में फंसने और धरती पर उतरने की पूरी कहानी। कैसे सुनीता विलियम्स स्पेस में फंस गईं और कैसे इन एस्ट्रोनॉट का धरती पर आना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि हम स्पेस से वापस आते हुए पहले ही एस्ट्रोनॉट की एक बड़ी दुर्घटना देख चुके थे, कोलंबिया एयरक्राफ्ट की, जिसमें कल्पना चावला से लेकर उनके कई साथी एस्ट्रोनॉट पृथ्वी पर उतरते हुए दुर्घटना का शिकार हो गए और सभी मारे गए। ऐसे में सुनीता विलियम्स और उनके साथियों को धरती पर लाने का प्लान आसान और सुरक्षित नहीं था, लेकिन अब सभी एस्ट्रोनॉट पूरी तरह से सुरक्षित धरती पर उतर चुके हैं। आखिरकार दुनिया को सुनीता विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट के धरती पर उतरने का इंतज़ार ख़त्म हो गया। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अन्य 2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए पृथ्वी पर लौट आए। बीते साल जून में महज 8 दिन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर गए थे ये दोनों एस्ट्रोनॉट, और 9 महीने बाद लौट पाए हैं। लौटने के लिए कई योजनाएं बनाई गईं, लेकिन कई योजनाएं फेल हो गईं। बोइंग का जो स्टार लाइनर यार उन्हें वापस धरती पर लाने वाला था, वो खराब हो गया था, इसलिए उन्हें इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। आखिरकार वो एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के तट पर सुरक्षित उतारा गया, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट वापस आए। समुद्र में गिरने के बाद कैप्सूल के चारों ओर जिज्ञासु डॉल्फिनों का एक समूह चक्कर लगा रहा था। ये डॉल्फिन समुद्र में थी और इसको समुद्र में उतारा गया था। अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन से धरती पर पहुंचाने में 17 घंटे का लंबा वक्त लगा। और ये पूरी यात्रा कैसी रही, यात्रा और कैप्सूल के जो मोमेंट रहे, उन मोमेंट में क्या क्या हुआ। जब धरती पर उतर रहे तो समुद्र में गिरने से पहले जो कैप्सूल था वो फिर से खुल गया। भारतीय समय अनुसार सुबह 3:27 पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लाने वाला कैप्सूल फ्लोरिडा के तट के पास समुद्र में गिराया गया। समुद्र के सतह पर आने के बाद कंट्रोल सेंटर की ओर से अंतरिक्ष यात्रियों का स्वागत करते हुए कहा गया, निक, एलन, बुच, सुनी, स्पेस एक्स की ओर से घर वापस आने पर आपका स्वागत है। कमांडर निक हैग ने खुशी जाहिर करते हुए जवाब दिया, कैप्सूल सभी के चेहरे पर मुस्कुराहटों से भरा है। अब बात चल रही थी कि जो स्प्लैश डाउन है वो ठीक से हुआ या नहीं हुआ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS से पृथ्वी तक आने का सफ़र लगभग इनका 17 घंटे का रहा था। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय ड्रैगन कैप्सूल की रफ्तार जो थी वो करीब 17,000 मील प्रति घंटा थी, जिसे कुछ मिनटों के अंतराल में तेजी से धीमा करना था। इसे तेजी से धीमा करने के लिए ही इस पर पैरासूट लगाए गए थे। इतनी तेज रफ्तार से आना
अगर किसी ऐसी जगह से टकराएगा तो वो खिल खिल हो जाएगा। इससे पहले जो हुआ था, मंगलवार को सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के साथ 2 और अंतरिक्ष यात्री निक हैग और रूसी अंतरिक्ष यात्री लेक्जेंडर गोर्बुनोव ने बाकी अंतरिक्ष यात्रियों से विदा लिया था। निक हैग और गोर्बुनोव जो पिछला साल था उसमें सितंबर में स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए 6 महीने के लिए अंतरिक्ष मिशन पर ISS पर पहुंचे थे। अब यहां खतरा बहुत था। 2000 डिग्री का तापमान और हीट शील्ड, बहुत खतरनाक था ये सफर। जितना हम आसान यहां देख रहे हैं उतना आसान था ही नहीं। जब कैप्सूल धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया तो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया था, जो कि करीब 3:20 पर फिर से बहाल हुआ। सब लोग परेशान हो गए अचानक से जब वहां कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया। अचानक से लोग डरने लगे कि अब यह क्या हुआ। वायुमंडल में प्रवेश के बाद अंतरिक्ष यान के प्लाज्मा शील्ड का तापमान 1927 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन हीट शील्ड सवार अंतरिक्ष यात्रियों को इतनी तेज गर्मी से बचाने में मददगार साबित हुआ। आप सोचिए कि 2000 डिग्री टेम्परेचर, जहां सब कुछ पिघल जाता है, कुछ भी बचता नहीं है, वहां जो हीट शील्ड थी उसने बचाया। तो फिर आगे चलते हैं। फिर करीब 3:21 पर अंतरिक्ष यान ऑटोनोमस यानी स्वचालित हो गया था, यानी अंतरिक्ष यात्री इसे नियंत्रित नहीं कर रहे थे। इस दौरान उनके सामने लगे टच स्क्रीन पर वे सारी गतिविधियों को देख पा रहे थे कि नीचे क्या हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है। अब तो लोगों की जान में जान आ गई थी। करीब 3:24 पर पहले ड्रैगन कैप्सूल के 2 पैराशूट खुले, जिससे इसकी रफ्तार और धीमी हो गई। इस दौरान एक जोर का झटका लगा और कैप्सूल की रफ्तार और धीमी हो गई। इसके बाद 2 और कैप्सूल खुल जाते हैं। अब यहां से कैप्सूल समुद्र में उतर जाता है। समुद्र में उतरने के बाद कैप्सूल के साथ क्या हुआ वो भी देखते हैं। जिस समय कैप्सूल समुद्र में उतरा उसके ठीक बाद ही पानी में कैप्सूल के चारों ओर कुछ डॉल्फिन जो थीं वो चक्कर लगाती हुई तैरने लगी। उनको उत्सुकता थी डॉल्फिन्स को कि भाई ये है क्या। अचानक से मौके पर जो मौजूद रिकवरी टीम फास्ट बोट से कैप्सूल तक पहुंची और पहले सुरक्षा का जायजा लिया और पैराशूट को हटाया। इसके बाद स्पेस एक्स का रिकवरी पोत पहुंचता है वहां, जो कि लैंडिंग साइट से 2 मील की दूरी पर रुका हुआ था। जिस समय अंतरिक्ष यान की वापसी हो रही थी, आसमान पूरी तरह से साफ और नीला था। इसके बाद रस्सियों के सहारे कैप्सूल को सुरक्षा नाव में लाया जाता है। और ये जो समय था ये सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय था। सभी लोगों के लिए इमोशनल थे। सभी लोग वहाँ इमोशन, ना सिर्फ वहाँ जो लोग वर्क कर रहे थे और जो लोग देख रहे थे पूरे इस स्पेस मिशन को, वो लोग सभी आंखें गड़ाए हुए बैठे थे कि आखिर क्या होने वाला है। अब आगे क्या होता है कि जब कैप्सूल समुद्र में उतर गया, वहाँ टीम पहुँच जाती है, तो कैप्सूल का जो हैच था वो खुल जाता है। इसके बाद ड्रैगन का साइड हैच खुला और सारी दुनिया अंतरिक्ष यात्रियों की झलक पाने का इंतजार करने लगती है। अरसे बाद ये लोग पृथ्वी पर ताज़ा हवा में सांस लेने वाले हैं। इसके बाद नासा की लाइव तस्वीरों के जरिए दुनिया भर में लोगों ने सुनीता विलियम्स और उनके साथियों को बाहर निकलते हुए देखा। क्रू के कैप्सूल से निकलने से पहले एक कैमरे ने अंदर की तस्वीरें खींची। इन तस्वीरों में सभी यात्री हाथ हिलाकर अभिवादन करते दिखे। क्रू 9 के कमांडर निक हैग ड्रैगन से बाहर निकलने वाले पहले यात्री थे। वो बाहर निकले, कैमरे की ओर देखकर मुस्कुराए, हवा में हाथ लहराए और आगे निकल गए। अब ये जो था ये लोगों को सुकून दे रहा था, ये जो तस्वीरें जब वहाँ पहुँची। तो अब कैप्सूल से निकलने के बाद यात्रियों ने बड़े खुशनुमा तरीके से हाथ हिलाया। कैप्सूल से निकलने से ठीक पहले सुनीता विलियम्स और विल्मोर ने कैमरे की ओर हवा में हाथ हिलाकर खुशी जाहिर की। अंतरिक्ष में करीब 286 दिन बिताने के बाद सुनीता विलियम्स
और बुच विल्मोर ने धरती पर ताज़ा हवा में सांस ली थी। सबसे पहले कैप्सूल से सुनीता विलियम्स उतरी, उसके बाद बुच विल्मोर, इसके बाद बाकी 2 साथी अंतरिक्ष यात्री उतरे। जिस समय वे कैप्सूल से बाहर आ रहे थे तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी वो तैर रही थी और कैमरे की ओर देखकर वे लगातार हाथ हिला रहे थे। करीब 9 महीने तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहते हुए इन दोनों यात्रियों ने हर दिन 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखा और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इससे तालमेल बिठाना उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। मतलब आप सोच रहे हैं कि वहाँ 9 महीने रहे और हर दिन 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त हो रहा था वहाँ। आप सोचिए एक दिन में, मतलब कितना वहाँ तेजी से दिन और रात बदल रहे थे। अब हम देखते हैं कि जो अंतरिक्ष यात्री वहाँ से उतरे उनकी सेहत कैसी है, किस तरह से उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। नासा के कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम के मैनेजर जो हैं वो बताते हैं कि अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं कि अंतरिक्ष यात्री कुछ समय के लिए रिकवरी शिप पर रहेंगे और फिर उन्हें ह्यूस्टन ले जाया जाएगा। टीम ने कहा कि अपनी टीम का शुक्रिया और नासा की ज़रूरतों के मुताबिक खुद को ढालने के लिए अमेरिकी अरबपति एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की तारीफ भी की है। हालांकि अंतरिक्ष यात्रियों का मेडिकल चेकअप किया जा रहा है और जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी इसके बाद परिवार से मिलने की इजाज़त मिलेगी। आमतौर पर इसमें 1 दिन का समय लगता है। अब वहाँ बताया कि वे अंतरिक्ष में रहते हुए बिताए गए अपने समय के बारे में बात करेंगे और फिर छुट्टी पर चले जाएंगे। देखिए क्या सुरक्षा के इंतजाम होते हैं, क्योंकि देखिए वो स्पेस से आए हैं और स्पेस में कुछ ऐसे बैक्टीरिया वायरस खतरनाक उनके साथ आ सकते हैं जो पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। तो इससे संबंधित उनकी पूरी सुरक्षा जांच की जाती है बहुत बारीकी से कि कोई भी स्पेस से आने वाला बैक्टीरिया वायरस जो भी खतरनाक हो सकता है वो किसी भी तरह से पृथ्वी पर नहीं पहुंचे। इसके लिए उनकी जांच की जाती है और तैयारी की जाती है। अब आईएएस पर 900 घंटे की इन लोगों ने रिसर्च की। नासा स्पेस ऑपरेशन मिशन के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बताया कि सुनी और बुच ने आईएएस पर रहते हुए 900 घंटे तक रिसर्च किया और इस दौरान 150 वैज्ञानिक प्रयोग किए। वो कहते हैं कि नासा अंतरिक्ष यात्रियों के किए गए प्रयोगों को देश के लाभदायक बताया और उम्मीद जताई कि इस दशक के अंत तक मंगल ग्रह पर इंसान उतारने के नासा के लक्ष्य में ये मददगार साबित होंगे। अब देखिए जो स्पेस में रहते हैं अंतरिक्ष यात्री उनके शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। उनके शरीर पर अंतरिक्ष में रहने के दौरान आमतौर पर अधिकतम 6 महीने का होता है वैसे, लेकिन ये लोग 9 महीने रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि इनके शरीर पर पड़ने वाला जो प्रभाव है वो और ज़्यादा खतरनाक होगा। अंतरिक्ष में रहते हुए शरीर पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। खुद को फिट रखने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को हर दिन 4 घंटे तक व्यायाम करना पड़ता है। हालांकि शून्य गुरुत्वाकर्षण में भारहीनता की वजह से हड्डियों और मांसपेशी जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। शरीर में खून का प्रवाह गुरुत्वाकर्षण की वजह से आसान होता है और अंतरिक्ष में रहते हुए इस पर भी असर पड़ता है। आँख में द्रव के इकट्ठा होने से आँख की रोशनी भी प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्रियों को रेडिएशन का भी सामना करना होता है। इसलिए आईएसएस पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य पर करीबी नज़र रखी जाती है। हालांकि अंतरिक्ष में हुए अधिकांश बदलाव धरती पर वापसी के बाद सामान्य हो जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ समय लगता है, कुछ नहीं काफ़ी समय लगता है। पृथ्वी पर वापसी के बाद यहाँ के वातावरण में ढलने में काफ़ी वक्त लगता है। और ये भी कहा जाता है, जो एक्सपर्ट कहते हैं कि इस शरीर को छुट्टियों जैसा एहसास मिलता है। आपका दिल, आपकी मांसपेशी और हड्डियों को आराम मिलता है यहाँ आकर। आप अंतरिक्ष स्टेशन में पृथ्वी के चारों ओर शून्य गुरुत्वाकर्षण में घूम रहे होते हैं और खुद को फिट रखने के लिए आपको व्यायाम करना होता है। लेकिन धरती पर वापसी के बाद के 2-3 दिन बहुत कष्टकारी होते हैं।
आप अंदाजा लगाइए कि शरीर किस तरह से गुजर रहा होगा उन लोगों का। इस वक्त वाकई उनके लिए आसान नहीं है, लेकिन अब वो सुरक्षित पहुंच गए हैं और उन्होंने 9 महीने वहां बिताए हैं। रोज जीरो गुरुत्वाकर्षण में 4 घंटे अभ्यास, योग योग प्रैक्टिस से लेकर और तमाम चीज़ों का अभ्यास किया उन्होंने लगातार। और नहीं तो गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है जहाँ, वहाँ कोई शरीर पर आपके भार नहीं पड़ता है, तो इसकी वजह से आपके ऊपर जब भार नहीं रहता है तो मांसपेशियाँ आपकी कमज़ोर हो जाती हैं, शरीर पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए ये बदलाव धीरे धीरे अब फिर पृथ्वी के अनुसार वो ढलेंगे और धीरे धीरे हम सब उम्मीद करते हैं कि वो सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अपने परिवार के लिए खुशियों देंगे और पूरी दुनिया के लिए खुशियाँ देंगे। For parachute recovery and also serves as a redundant boat to the first one that makes the initial approach to the Dragon spacecraft. As we saw a little bit earlier, we were also able to see one of the recovery team members get on a jet ski to help gather up the parachutes that were automatically detached from the Dragon spacecraft upon splashdown. And it will take a little over 10 minutes for the recovery crew to complete their safety checks. Once complete, the team will begin preparing Dragon to be lifted. And as you see, they are preparing for that to take place at this point. As part of the preparation for this lift, one member of the recovery team has climbed on top of the spacecraft already so they can attach Dragon's hoist rings and connect to the lifting lines. It will take us less than an hour to raise Dragon to the recovery boat and remove the crew from the spacecraft. After medical checkouts, the crew will return to land within 4 hours by helicopter. And if no additional medical assistance is needed, the crew will board a waiting NASA plane and depart for Houston. And as we continue to await Dragon to be hoisted up onto the ship, we have a very special treat. NASA Public Affairs Officer Jaden Jennings, who is actually on the recovery vessel and had a bird's eye view of the splashdown today. Jaden, how are you? How was the view from the recovery vessel? Hi, Sandra. How do you hear me? I've got you loud and clear, Jaden. It's so great to hear you. Awesome. So splashdown, Sandra, was nothing Freedom, short of be advised. spectacular. We are transitioning the forward link. Comm will be unavailable for approximately 5 minutes. Freedom comes. Thanks so much, Jaden. We did just have some communications letting us know that we'll have about a 5-minute period where we won't be able to hear from the crew. So please go ahead, tell us, how was the view from the recovery vessel? Absolutely. Yeah, I was mentioning earlier, splashdown was nothing short of spectacular. And we were stationed about 1.5 nautical miles away from the splashdown zone and had great visuals here on the recovery vessel Megan. We actually saw a little of the smoke trail as the spacecraft was coming in. And then moments later, we spotted those drogue chutes. And this was quickly followed by 4 healthy white and orange main parachutes. We then tracked Dragon all the way down as it slowly propelled into the ocean. And I think I speak for all of us on the ship when I say a new core memory was made today, and we are looking forward to having Crew 9 on board with us a little later. Jaden, that is amazing. Now, obviously, we are watching it here on camera, and the landing conditions look pretty good, but how was it from your perspective? What is the sea state out there? Absolutely. Absolutely. So we've had optimal conditions for splashdown, and today it is sunny and 63 degrees outside right now with clear skies, light winds, and calm seas. The sea looks absolutely beautiful right now, and light blue with the sun reflecting from it. And Kay, I think the crew's going to like what they feel weather-wise on this picture-perfect day for splashdown off the coast of Tallahassee.
Thanks so much, Jaden. It certainly looks like a beautiful day. Can you tell us a little bit about the journey of the recovery forces to get to this point? Sure. So one unique aspect of this recovery was the onboard training on station conducted for Butch and Sunny to ensure they were ready to return on a Dragon spacecraft. That training covered all aspects of their return, including nominal and contingency departures, deorbit burns, splashdown, and post-landing ops, which is what this team is preparing for now. As for the recovery teams themselves, we started the day taking a series of helicopters out to the vessel. And as standard, the recovery director and crew support teams were on that first helicopter out and took the time to get everything prepared on the ship. About 2 hours before splashdown, they deployed those fast boats and jet skis into the water. I was actually on the second helicopter out, and we were on the vessel about an hour and a half before splashdown and landed on top of the helicopter pad on the Megan. And the teams have been working diligently across their respective disciplines this week, executing what can only be described, in my point of view, as a logistical masterpiece, just ensuring every detail has been in place for Crew 9's return. That is such great news. I'm so glad that you're able there to experience it in person. Now, can you tell us a little bit about what's next to retrieve the crew for the recovery personnel on board? Yeah, Kate. So coming up next, Dragon will be hoisted into the on-deck translation system, or the nest, at the aft end of the ship, and then will be translated pretty quickly towards that egress platform. We'll perform another series of safety checks as final precautionary measures just to make sure there are no hypergolic vapors present before opening that side hatch. And then once that side hatch of the spacecraft is open, the crew will be assisted out of the capsule one by one from NASA and SpaceX. Freedom, SpaceX, ComCheck. Freedom's got you loud and clear. Thanks, Nick. I've got you loud and clear as well. We have completed our forward link transition. And Jaden, if you did just want to go ahead and let us know what is next to retrieve the crew, we are continuing to get some great views on our screen, but I know you have an even better view yourself. Oh, yeah, Sandra, this view is absolutely unbeatable. So just to kind of finish off what I was saying is once that side hatch of the spacecraft is open, that crew will be assisted out of the capsule one by one from NASA and SpaceX medical personnel, where they will then head to the med bay. And after those medical checks, they will get on that first helicopter out and arrive at the airport, where they will then board a NASA plane and then head back to Houston, Texas at the Johnson Space Center to begin their post-flight period. And we're eager to see the Crew 9 astronauts back on Earth, and we'll keep you updated on every moment of this process. With that, I'll toss it back over to you guys in Hawthorne. Thank you so much. That was Jaden Jennings, NASA Public Affairs Officer, who watched Freedom splash down firsthand from the recovery vessel Megan. Thanks so much, Jaden. So we are continuing to get these great views on our screen here of Freedom. As we mentioned, it splashed down at 2:57 p.m. Pacific time off the coast of Tallahassee, Florida. The recovery personnel are continuing to step through procedures to hoist Dragon onto the recovery vessel Megan there, which is now coming into view. You can see just how close Megan is at this point. And that's that helicopter pad that Jaden was just discussing, where the crew will fly off of onto the coast of Florida, and then eventually they'll fly back to Houston. Just underneath that helicopter pad is that translation deck where we will see the nest once it is loaded up with the Dragon spacecraft on board. The nest will be translated to the forward end of the recovery vessel, and that is where our Crew 9 team members will egress from the Dragon spacecraft. Now, here on your screen, we can see dolphins, actually, who want to come and play with Dragon. Now, one of the fast boats there in place, working to assist the recovery team member. It's incredible. I just love these views. We really see them even better in daytime, but just seeing the recovery team work in tandem to step through each operation.
Obviously they're getting quick assists from the honorary part of the recovery team, those dolphins in the water there. Now the recovery team member that is crawling around the Dragon spacecraft. Earlier we saw a view where it was like a spider monkey pose. We can see that individual now standing in the bucket where the main parachutes were stored while Dragon was on orbit. Obviously, those main parachutes were utilized for splashdown today. They were deployed and cut from the Dragon capsule, and one of the other fast boats of the recovery team working to pull those out of the water. Now, the recovery team member that is there working on top of the Dragon capsule. Earlier, we saw that person performing safety checks. Now we can see some harnessing being placed around the capsule. This harnessing is what will be used to lift the Dragon capsule out of the water and onto the recovery vessel. Wow, we got a cute little pod of dolphins. It wasn't just one or two. I mean, that water just looks beautiful. We had ideal splashdown parameters today. Obviously, wave height, ne'er a concern. The weather is beautiful, as Jaden mentioned, in the 60s, sunny. Looking forward to seeing Crew 9 exit the capsule here shortly once they get hoisted onto the recovery vessel Megan. We can see that recovery vessel slowly but surely closing the distance there between, dolphin cam back again. We can see that the Dragon capsule and the recovery vessel, that distance is closing. Again, this is just one more step as we continue to work recovery operations for Dragon Freedom. And we anticipate the lift of the Dragon capsule to occur here in just a few minutes. Now, once all of the rigging is on the capsule and it's hooked up to the recovery vessel, we will see the hydraulic arm, which is that kind of like bridge-like structure there at the aft end of the recovery vessel. We'll see that articulate backwards, and that's a good sign that we're getting even closer to pulling the capsule out of the water. It will then move forward, and the capsule will be placed inside of what you can see there is basically a basket. We call it the nest, Dragon nest, that's where the capsule will be placed in order for it to be translated to the forward end of the vessel and for the astronauts to egress. And before that does take place, we'll have potentially views of the rigger go ahead and jump off of the spacecraft there. That typically occurs when the spacecraft is a little bit closer to the recovery vessel, and we usually get a really good view of that particular operation from one of the onboard cameras from the recovery vessel. That is an operation that I have a lot of respect and admiration for, that individual that does that. So again, Dragon continuing to get closer and closer to the recovery vessel Megan. You see some of those ropes now coming into view as well. If you are just joining us, Crew 9 splashed down off the coast of Tallahassee, Florida at 2:57 p.m. Pacific time with NASA astronauts Nick Hague, Butch Wilmore, Sunny Williams, and Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbanov. They're now working through procedures to hoist this spacecraft up onto the recovery vessel Megan. We just saw that hydraulic arm get lowered into the lifting position. That arm will be the mechanism that is utilized to lift Dragon up and out of the water and into the nest located there at the aft end of the recovery vessel. And the recovery vessel being used today is, as we mentioned multiple times, is named Megan, but that's actually after NASA astronaut Megan McArthur, who flew on Crew 2 a couple of years ago. We're getting some views now from actually inside the boat. Yeah, you're exactly right. This view is straight down the recovery vessel
That platform that was closest to the camera, that is the egress platform. Freedom, rigging is almost complete. Approximately 5 minutes until capsule lift. Great news there from SpaceX Core. So about 5 minutes left until we see Dragon Freedom get lifted out of the water. That hydraulic arm, as I said before, is the mechanism that will lift it. It's quite swift, actually, the whole process of getting the spacecraft. Brace for capsule lift. Bracing. There it goes, Dragon Freedom being lifted out of the water and onto our recovery vessel, Megan. So once securely on, Welcome aboard the recovery vessel. Recovery personnel are completing final checks and stand by for translation to the egress platform. Freedom copies. Side hatch. One from any potential damage. Oh, we can see the recovery crew member there taking photos of the side hatch seal. This is part of the standard operation for recovery. These photos will get saved into our procedure. We'll then install that protective frame around. exit from Dragon. We can see folks on board clapping as our first crew member. And that is NASA astronaut Nick Hague, commander of Crew 9. Now out of Crew Dragon Freedom. Some smiles, thumbs up, and a wave. Can't get any better than that. Yeah, that is one happy camper, that's for sure. As we said before, it is standard procedure for all of our long duration crew members to receive assistance upon egressing from the spacecraft. We basically help them move off of the recovery deck and into the private medical quarters for their initial consultation with the SpaceX flight surgeon. So we'll see that take place for all 4 of our crew members today. And we are standing by for the next crew member to exit Freedom. Next up out of the capsule, we expect Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbanov. His first space flight. Spent 171 days in space alongside NASA astronaut Nick Hague. Looks like we're getting some cheers and clapping on board as Alexander is slid down the little ramp and placed into the mobility aid. Once again, big smile.
Now, the two crew members remaining in Dragon are NASA astronauts Sunny Williams and Butch Wilmore. They completed 286 days in space. One of the remaining footrests being removed from the Dragon spacecraft. As I said before, we generally try to have the crew members that are located in the two center seats aboard Dragon, and we like to have them egress first if possible, as it creates a little bit more movable working room inside the spacecraft. There is a recovery crew member inside that is helping all of our Crew 9 crew egress or exit from the spacecraft. We are standing by for the next crew member to egress or exit Crew Dragon Freedom following the splashdown not even an hour ago at 2:57 p.m. Pacific time. Really have the recovery operations down pretty quick at this point. Yeah, it's pretty incredible to think that, just 5 years ago when we were doing the initial demonstration missions of the Dragon for Crew Dragon, that now we're under about 30 minutes for, to retrieve the spacecraft from the water, and just several minutes here while it's been on board, and to get everyone, really to get that side hatch open. For those of you that have just recently joined, the Dragon had an on-time splashdown. It looks like we're getting our next crew member here. That is none other than Sunny Williams. Big smile, big waves. She, like her other crew members, now will be assisted onto the mobility aid. There we have it, some waves, some thumbs up, and some smiles. Definitely seems to be a theme among all recovery operations. Absolutely. And of course, that leaves NASA astronaut Butch Wilmore inside Dragon in seat 4. We're getting some views of him now as he egresses or exits the spacecraft. Once again, some elation and cheers there from Butch Wilmore. As we mentioned before, returning to Earth coming from a microgravity environment can wreak havoc on the body. So it is customary and just standard procedure for all of our long-term space residents to get assistance once they are back on board the recovery vessel. Well, now that Nick, Butch, Sunny, and Alexander are safely back home on Earth and getting checked out by the NASA medical team,